जब भी आप नोकिया का नाम सुनते हैं तीन चीजें आपके मन में जरूर आएंगी: ड्यूरेबिलिटी, क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैटरी लाइफ। और ये है ब्रांड न्यू नोकिया G42 5G। ये तीन एग्जैक्ट नोकिया की वैल्यूज तो हैं, बट इट एड्स सो मच मोर। लेट मी एक्सप्लेन। शुरू करते हैं विद बैटरी, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें है 5000 mAh की बैटरी, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप बोलोगे नॉर्मल साइज बैटरी है, बट आई टेल यू व्हाई इट्स फैंटास्टिक। ये फ़ोन आपको लास्ट कर सकता है 3 full days ऑन अ सिंगल चार्ज। आप बोलोगे हाउ इज दैट पॉसिबल? नंबर वन, बैटरी मैनेजमेंट इंजन डज अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग। रीजन नंबर टू, प्रोसेसर बड़ा ही फ्रूगल है, इसमें डजंट कंज्यूम टू मच पावर। एंड नंबर थ्री, इट्स अ नोकिया आफ्टर ऑल। बैटरी लाइफ में दीज गाइज आर ऑसम। 20 वॉट का चार्जर बॉक्स में उन्होंने दिया, विच ऑल्सो सपोर्ट्स PD एंड QC स्टैंडर्ड्स, सो यू कैन चार्ज अदर डिवाइसेस यूजिंग इट एज वेल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स इन द नोकिया G42। शुरू करते हैं विद the design. देखो, it looks and feels a premium handset. Color जो Nokia इसको कह रहा है so purple. I think actually it is really so purple. Some people will love it, including me. I think it's beautiful. What do you think? Do put the comments below. Edge feels very nice and comfortable. Phone sits nicely in the hand also. Not very heavy. Weighs just 194 grams. While most phones now come with a hole punch cutout, Nokia ने हमारे को water drop notch दिया है for the front camera. IP52 rating भी है, which is nice, and the phone's also protected by Corning Gorilla Glass 3. So there's enough protection against drops or scratches. अब चलते हैं towards the display. 6.56 inch HD plus panel है, 90 Hz refresh rate है. For this price range, I think it's a good panel. 560 nits of peak brightness है. Panel gets plenty bright for indoor and outdoor use. Watching movies and content on the screen looks and sounds really great. Colors pop off the panel and the speakers are really loud. कैमरा आप देख रहे हैं, वेरी नाइस कैमरा पैनल एट द बैक। 3 lenses हैं ऑन दिस बैक ऑफ दिस फोन। 50 megapixel प्राइमरी शूटर इज द वन गिविंग यू द मेन कैरेक्टर वाइब्स। मैक्रो और डेप्थ सेंसर आर इन द सपोर्टिंग कास्ट। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द शॉट्स वी एक्चुअली क्लिक्ड ड्यूरिंग द डे। G42 took some very nice colorful pictures, very nice details, good dynamic range, all very nice. One thing I really like, the watermarks. ज़्यादातर फोन जो है एक सेट वाटरमार्क दे देते हैं आपको with the name of the device, the date and time, and maybe one or two other things. G42 has a long list of custom watermark for your pictures. Truly makes it your own shot. Great idea once again, Nokia. अब चलते हैं towards performance. You know, this has got a Snapdragon 480 plus chipset. Day-to-day tasks feel robust, lag-free. Our gaming sessions were always fun. Some wins, some losses. But तो मेरी गलती है, फोन को थोड़ी blame करूंगा मैं. And it runs really cool during all the rounds. 6GB RAM, 128GB storage है. There's up to 5GB of virtual expandable RAM also. This gives the phone the extra juice when you need it the most. User interface, Nokia है, clean stock Android, no bloatware, just plain vanilla Android, the way we all love it. Fantastic. Android 13 है out of the box. Nokia also promises 2 years of Android updates as well as 3 years of security updates. एक headphone jack है at the bottom and a side-mounted fingerprint scanner. The best spot to have it. Fast, reliable, easy. और ये फोन है, it is available on Amazon. प्राइस अब Amazon पे है इसकी 11,999. चलिए अब मिलते हैं रवि कन्वर से, VP India and APAC HMD Global. उनसे पता करते हैं about this phone and the fact that HMD is coming up with their own branded phones also. Interesting new play. So phones हम लोग ने देख लिए हैं. Now comes for the big treat that I promised you right in the beginning. But before we get into again discussing the phone, welcome to the show and welcome to what I think is going to be a very engaging conversation. HMD brought out Nokia, okay, became a licensee. Nokia के फोन निकाले और HMD अब अपना ब्रांड, as in HMD itself will have its own branded phones, right? तो ये जो फुल सर्कल है, how will this work? Why has this been done? तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये मानना है कि वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव दैट फैन बेस ऑफ नोकिया, बिल्ड इट स्ट्रॉन्गर, बट इक्वली जो एक कंज्यूमर बेस जिसको हम अभी नहीं अटैक कर पा रहे थे, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं HMD, जो कि हम अब बोल रहे हैं ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो वो जो ह्यूमन एंगल है और वो जो सस्टेनेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, उस सब को एक मिक्स करके कैसे हम डिवाइसेस जो हैं एक अफोर्डेबल डिवाइसेस अक्रॉस कैटेगरी, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो फीचर फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट्स हों, और हम इसे सिर्फ हार्डवेयर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे. एक कंप्लीट इकोसिस्टम का जो पैकेज है वो हम इस HMD ब्रांड के तहत मार्केट में लेके आएंगे. अच्छा, I want to circle back again a little bit before this entire announcement of HMD. जो विजन थी HMD की for doing this entire thing, and जो where you have reached right now, do you believe that that vision to provide
fans with exactly what they were looking for across the spectrum. You think HMD was able to do everything with the Nokia brand? बिल्कुल एंड मेरे को भी अगर मैं बोलूँ तो नोकिया ब्रांड के साथ 20 साल का एसोसिएशन है एंड ऑल जो फ़ोन्स आप बात कर रहे हो चाहे वो हमारा एंगेज गेमिंग फ़ोन होता था या म्यूज़िक के जो फ़ोन्स होते थे देयर वाज लॉट ऑफ इनोवेशन इन देयर एंड जो HMD के साथ हमने जर्नी स्टार्ट करी इफ़ यू लुक एट the kind of products which we have brought to the market each had this whole innovation. तो जब 3G से 4G मूवमेंट हुआ था इन इंडिया लॉट ऑफ ब्रांड्स स्पेशली इंडियन ब्रांड्स गॉट लॉस्ट आउट बिकॉज अब जो 4G to 5G में आया है हाउ आर यू फेयरिंग? मैं इसको सिर्फ एक 5G की जो स्ट्रैटेजी है उसको एक हार्डवेयर के तहत आइसोलेशन में नहीं देखता ओके क्योंकि फॉर एनी फोन टू बी सक्सेसफुल व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ 5G which has to be a work around not only just the hardware but the whole spectrum and the speed and what are the use cases for using the 5G. क्या हम लेट हैं इसमें? आंसर इज नो. बट इंडिया वाज वन ऑफ दोज रेयर प्लेसेस जहाँ पे जिस दिन फर्स्ट डे 5G शुरू हुआ वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस ऑफ फोन्स वर ऑलरेडी ऑन 5G राइट? तो वो भी तो एक मार्केट थी दैट कुड हैव बीन एक्सप्लोर्ड स्पेशली नोइंग दैट नोकिया इज अ लेगेसी ब्रांड जिसका बहुत भरोसा है लोगों को. सो वी डिड इनफैक्ट जो हमारी X सीरीज़ है जो X30 जो हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज थी X सीरीज़ की वो 5G एनेबल्ड थी. अगर आप इस कैटेगरी में एक्सप्लोजन देखना चाहते हैं तो आपको 15,000 से आसपास या 15,000 के नीचे का एक ऐसा फ़ोन लाना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर्स इज सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस ऑफ दैट. तो उसी के तहत ये जो हम G42 5G लेके आए हैं इज फुलफिलिंग ऑल दैट प्रॉमिस व्हिच अ कंज्यूमर इज लुकिंग फॉर. What is it that is going to distinguish between Nokia and HMD? Will it be price points? Will it be aggression on price points? Will it be features? Will it be innovation? सो जो हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है इट्स नॉट अराउंड प्राइस इट इज अराउंड व्हाट द कंज्यूमर्स नीड and what is it that we could challenge the limits with Nokia as a brand Okay. and what is it that we can do outside the Nokia. And Nokia is all about sustainability, about ethics, is about how you can do drive. So how do we build on to those features and are able Still to bring in that compete stuff. Okay, so some of the other so things. This is going to be a hybrid brand in every which way, the best of both worlds. Yeah. Let's come down to this phone itself. हम लोग तो review कर दिया. So which is why I'm going to pin you down to the top 3 features you think truly make this phone stand out for a consumer at this price point. So सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा is the ट्रिपल कैमरा. 12,599 के अगर प्राइस पॉइंट में हम देखें तो पहली बार आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल +2+2. सेकेंड जो है हमारा जो ओवरऑल ब्रांड प्रॉमिस रहता है इज कि इन टर्म्स ऑफ द होल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स एंड उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वी स्टिल कंटिन्यू टू रन आवर प्रॉमिस कि हम इसके अंदर 3 साल तक हर महीने सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे. तीसरा अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो नाउ पावर्ड विद अ Qualcomm प्रोसेसर एज वेल. So the viewing experience, whether it's your gaming experience, viewing experience becomes much better at that price point. I want to know Nokia say what can people expect now into the next 6 months to 1 year? Do we have more tablets coming? Do we have new categories that you're looking at with the Nokia branding? Are there some more phones? Are you exploring under 10K for 5G? Because holy grail to India के लिए वही माना जा रहा है. We will continue to innovate and bring what we believe is right for consumer. And especially जो focus रहेगा वो 5G में तो रहेगा ही रहेगा. Okay. So whether it is pushing the limits on price point and ensuring कि होली ग्रेल को हम मीट करते हैं वो कब कितने टाइम पीरियड में मीट करते हैं that's a challenge we accept and we will work on that. अब Nokia का one of the strengths is that you're an omni-channel platform. You know, you can reach out to consumers that many other brands can't. तो ये भी जो है is on an omni-channel offering. So starting में जो G42 5G है जो 6128 वेरिएंट हम लेके आ रहे हैं ये Amazon एक्सक्लूसिव है. So ये Amazon में मिलेगा बट एज यू मेंशन्ड वी आर एन ऑमनी चैनल प्लेयर. तो इसके जो सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स आएंगे वो ऑनलाइन में भी होंगे और जो अब नई टर्म है हमारे जो मेन चैनल है मेन लाइन चैनल में भी होंगे और ऑनलाइन चैनल में भी होंगे. To start off with online and then starting bring online, it down. it's on Amazon. So on that very positive note, thank you so much for coming and joining us. Great phone. I am expecting and predicting great success for this phone. Thank you so much for speaking with us. Thank you, and Rajiv. hope to catch up with you again. Yeah, thank you. Pleasure. तो ये था Nokia G42 5G and of course everything about HMD also. क्या लग रहा है आपको about this phone? I would love to hear your thoughts. Drop them in the comments below and keep coming back for more right here on Tech Magnified. See you in the next one.